Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And in this episode of taking up economics previous year questions, especially of paper two, which is linked with Indian economy, which is very much core part, and certain elements are very, very much crucial for not only for prelims, mains, and even I would say for interview also. So the terms, the ideas, and the thoughts they are going to help us to make a framework. Though we are looking into answer writing as of now. So let's start. So distinguish between cooperative, contractual, and corporate farming. Which of these is best suited for India and why? So very, very smart and deceptive question is this, because all the forms are suitable. It depends upon the conditions. It depends on the geography. It depends upon socio-economic conditions. So many factors are there. Farming and allied sector is the backbone of Indian economic growth due to still 53% of labor force engaged in it. Fair enough. Fair enough. It's a good beginning. Types of farming and differences. Cooperative farming, farmers in group pool the land voluntarily to join carry out agriculture, enhance productivity and reduce cost and risk. Very true, that is right. Overcome challenge of marginal land size, better access to credit and inputs like seeds and fertilizers, Amul cooperative and large participation of self-help groups. Whereas contractual farming, the farmers enter into formal agreement with high obligatory terms and conditions, pre-agreed price of produce, wages, quality and quantity. So I think in contractual, we have to bring the idea of the multinational, because there is a big corporate houses there in case of contractual farming. So I think when we talk about cooperative, so you are already saying that risk is less, and then there is more assurity, and there is less chance of farmer being duped. Whereas contractual farming can be a little pushy, and we have to bring the idea of a multinational corporation which is exclusively based on profit. And then in because contractual also corporate also carry on contractual, and then corporate farming as such, as you are saying, assured income and expertise of big corporate with availability of input to farmers become employees and not partners. Very true. So all ideas are visible and capital intensive with heavy machinery and scientific use of data, high efficient with minimal risk to farmers, and stronger backward forward linkages there. So first, what we are able to do is that we are able to bring all the three forms, and we are able to bring their distinct features. Now, suitability for India, basket of three, private corporates already active but with limited share, 4% as per Economic Survey 2024-25. For example, ITC, Chapal, I think fair example is given. Farmers' education about contractual farming will increase the share and assure increase in income. So we have to give, we have to give example. We have to also bring the role of, for example, agriculture produce marketing committee. That is also linked with all these forms of farming, because they are linked with actually how the produce will be taken up. So role of APMC, role of high yielding variety seed, and efficiency. Do 2-3 factors we could have just inserted in which context which are there. So job creation through corporate farming will help solve the disguised employment. Therefore, a mix of three can help achieve economy of scale in agriculture and diversifying the produce. I think it is a fairly written answer, bringing all the aspects as we have discussed yesterday also. If you go through our previous discussions, that the level is increasing and we are bringing micro points. So a bit more sustained thinking in this direction will bring more innovative point. For example, in case of corporate, we can say even if we talk about satellite data, even if we are talking about Internet of Things, these terms we can obviously use with the corporate farming. And we have to bring little I should say compassion for cooperative, because there we would say that even if a cooperative wants to become very modern, so it is not happening immediately. So there are bottlenecks also. So many may would like the cooperative to be very modern, cooperative to be very management oriented. So we have to bring that the recently passed National Cooperative Act. And even the word FPO must also be coming somewhere, that is farmer producer organization. That is very, very important in the real world. Farmer producer organizations, I can give you an example. In Maharashtra, when a scheme was there, for example, PM Fasal Bima Yojana was there, so it was misused and were not reaching the farmers. And then as far as FPO is concerned, then at times FPOs are threatened by state marketing companies. They threaten them, do like this, don't if a state is asked to procure
Then state marketing companies, or state level food corporation. FCI is at the national level, but the state level bodies, they they create a scene, and they will try to twist the thing. So we have to bring little bit more realistic approach, I mean to say, some data, and I think rest we are able to create a structure, and we are able to bring points. Delineate the trends in the growth and industrial composition of public sector in India during so amazing. It's a one theme. You will find couple of even books completely devoted to this theme. So we have to create trends. So trend in the growth and industrial composition of public sector. So heavy industries were created through public sector, and they were oriented towards they were oriented towards more towards they had monopoly in that sector, whatever they were given. Sectors like petroleum, sectors like fertilizer, sector like coal. Then you have sector like Hindustan machine tools. So they, you have to just think of PSUs. For example, even we had PSUs in defense, we had PSUs in even in textile sector. So everywhere government was there, first of all. So trend, you have to also visualize very quickly that it was a monopoly, and then it was not for export orientation, it was for self consumption and inefficiency. And then in terms of autonomy and managerial aspect, they were not the best of the they were not the best of the examples. So let's see what ideas we can bring up very quickly. The share of industrial sector during independence was 7% of GDP, marked by a stunted growth period so far. Agreed, but then we, rather than saying in the beginning only that because the question is not saying to criticize, the question is not trying to bring the lacuna, it is asking. So you have to say whatever policy was taken up, in that it was stunted. Whatever we are doing in that context, it is not that I hope you're getting my point, what I'm trying to convey. So we have to keep it very broad, because PSUs were the lifeline. It was because of PSUs only later on private sector emerged. The foundation of private sector in India is based on PSU only, because the heavy bulwark was done by PSUs only, steel, so everywhere PSU was the lifeline. So that is why we can't say. So textile sector driver, commercialization of agriculture, produced one of the largest cotton and jute. Agreed. Primary sector largest share, opium, indigo, steel, iron industry, coal, TISCO in 1911. Heavy industries were established under the second five plan of PC Mahalanobis, engineering, goods, mineral, mining, and electronics. Industrial policy of 1948 is a very good point. State-led industrialization, mixed economic model. Strategic sectors reserved for public sector only: defense, railways, atomic energy, and power. So the trend. So we have to like you are bringing trend. For example, is point number F: domestic competitiveness, import substitution, cemented license raj with complex entry and exit from the market. In 1980 onwards, the incapacity of public sector enterprises was recognized. A gradual opening of the private industry, the FDI was allowed. Yes, incremental capital output ratio remained high, around 3. Industries remained labor intensive. So the later part of the answer is becoming very, very comprehensive. It was not seemed to be in the beginning. In the beginning, we lost a couple of lines. We could have been more smarter over there. Industries remained labor intensive with lack of exposure. ASSOCHAM. Computer revolution of 1980s marked a significant shift toward digitization. Therefore, 1991 LPG reforms marked the beginning of Industrial Revolution 2.0, dominated by ease of investing and doing business, liberalization of reserve sector, automation of work, SEZ policy, export-oriented production, disinvestment of PSU led by DCOM. So I think this is one of the comprehensive answers where you have given certain examples and facts also. Even one more level will be coming up if you really know, when we are covering up the theme of the public sector enterprises and their presence. So there will be a couple of keywords which are used when we speak about their performance, like मिनी रत्ना महारत्ना का जो एक कॉन्सेप्ट है जो बनाया, क्लासिफिकेशन भी बनाया बाद में. And MTN itself was a PSU, but then it collapsed in telecom. So you have to bring that also, that we were so I think fairly answered, but then one or two more points, like I just said, they would give us more edge. Compare the strategies of trickle-down growth with inclusive growth. Wow, very open-ended question. Why should the strategy of inclusive growth be preferred? Open-ended and very, very clear-cut question. Inclusive growth is a pattern of growth where all sections of society grow and develop equally with equity and achieving full potential of GDP as defined by Niti Aayog. Fine.
strategies: digitalization strategy, ministry of government, maximum minimum government, maximum governance strategy, atmanirbhar strategy, utilization of demographic dividend strategy, export oriented growth. So you have to use word like, digital public infrastructure. That could have been more comprehensive word. And I think all of you are writing, but then in classification I'm saying one word can be digital public infrastructure, one strategy is that, and secondly, using census or identification of the key beneficiaries means rationalizing, or you can say how we should put it. That's what I'm saying. So points are okay, points are definitely on track, so I'm just trying within the points only. So digitization, you were talking umbrella reach, minimum government, good governance. So I think very good innovation, very good innovation, but then it shouldn't become too complex because you are already using those words and it is saying why. तो why आप सब जा रहे हो तो why में, लेकिन आपने जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है वो अभी तक आई नहीं। पॉइंट ये है, तो देखना पड़ेगा हमें कि क्योंकि कंपेयर करना है स्ट्रेटजी को, तो आगे चलिए। अगर चलिए, हम स्ट्रैटेजी जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ की है तो वो हमने मेंशन कर दिया, फिर उससे एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रिकल डाउन ग्रोथ कैसे होगी उसके थ्रू, जैसे अम्ब्रेला रीच डिजिटाइजेशन की वजह से, तो वो एक ट्रिकल डाउन फैक्टर हो गया। नहीं नहीं, आपने फिर इसको ऐसे जैसे इंटरप्रेट किया, तो मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूंगा अगर आप क्वेश्चन को दोबारा जाएंगे कि प्री लिबरलाइजेशन ईरा में ट्रिकल डाउन ग्रोथ ही थी। ये पोस्ट लिबरलाइजेशन में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आई है। जब हमारे पास पीएसयूज थे, जब हमारे पास हम राशन बांट रहे थे और हम जो है केरोसिन का ऑयल दे रहे थे, तो हम ट्रिकल डाउन ही कर रहे थे। हमारे पास इंक्लूसिव एजेंडा नहीं था। गरीबी हटाओ की जब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर की इतनी ग्रोथ करेंगे, हर चीज टुकड़े टुकड़े में थी। हम्म। वो ट्रिकल डाउन ही फेस था पूरा का पूरा। इसलिए 12th फायर प्लान तक आते आते हमें हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं, हम इतने जाग पाते हैं कि अब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, जो जैसे बाद में कह रहे हैं ये। लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जब थी तब उन्होंने सबसे पहली बात ये एजेंडा लेके आए थे। ये बात हो रही है 2000 के आसपास की, हम्म। तो उससे पहले तो वर्ड ही नहीं आता। तो स्ट्रैटेजीज ऑफ ट्रिकल डाउन ग्रोथ आज की डेट में नहीं है, इंडिया यूज ही नहीं कर रहा। लेकिन इंडिया ने पहले ट्रिकल डाउन ग्रोथ की स्ट्रेटेजी आप देखोगे प्री लिबरलाइजेशन में, तो ट्रिकल डाउन नहीं है ना, इंक्लूसिव का उस टाइम मतलब नहीं बन रहा है। हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरल इंडिया में है। हम बोलते थे कि भाई एक स्कूल बना देंगे, सारे बच्चे पढ़ लेंगे। हम बोलते थे कि भाई जो है ट्रिकल डाउन ना, आपने बस अड्डा बना दिया, हाँ, तो आपका वो हो गया, आपका जुड़ जाएगा। आपने एक हॉस्पिटल बना दिया एम्स जैसा, तो सब वहीं से। तो पहले ट्रिकल डाउन कहाँ, पहले ट्रिकल डाउन नहीं था ना, पहले टॉप बॉटम अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हो आप इसको। जी। जब तक पंचायती राज नहीं आया या जब हम्म। तक अर्बन गवर्नेंस 74th अमेंडमेंट से नहीं आई, तो ट्रिकल डाउन नहीं था वो। उसके बाद ही हमने जो है इंक्लूसिव की बात की। भाई वो थे ही नहीं ना, डिसेंट्रलाइज तो थे ही नहीं, ग्रास रूट लेवल पे कुछ। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग वाज द लोएस्ट लेवल। जी सर। आपने इसको इंटरप्रेट इनोवेटिव तो ठीक किया, लेकिन आपको ऐसे सोचना ऐसे सोचना मेरे ख्याल से चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आज की डेट में बात करें तो कोई ना कोई चीज तो ट्रिकल डाउन भी है, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई चीज ट्रिकल डाउन से भी हाँ। चलेगी ना आज की डेट में भी। हाँ ऐसा सर। नहीं है कि भाई ट्रिकल डाउन हम कहीं हम सोचेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं है। यूजीसी है जैसे, अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके लिए हमने हायर एजुकेशन का भी कुछ बॉडी बनाया, तो ट्रिकल डाउन ही है वो। यूजीसी बोलती है गाइडलाइन, फिर स्टेट वाले फॉलो करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पे जा रहा है, फिर ऐसे करके हो रहा है। तो आई थिंक ये ट्रिकल डाउन का मतलब यहाँ था कि व्हाई शुड द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ बी प्रेफर्ड। तो आपने भी सही किया, पर आई एम जस्ट गिविंग यू वन मोर आइडिया टू हाउ टू सी द क्वेश्चन। अदरवाइज आई थिंक वंडरफुली रिटर्न है अगर उस तरीके से हम सोचे तो। लेकिन मेरी समझ में फिर ये बात नहीं है कि भाई कि आप एकदम से किसी भी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। हर स्ट्रैटेजी का कुछ ना कुछ यूटिलिटी तो होगा ही। तो उन्होंने दोनों को कंपैरिजन में क्यों रखा, इसका मतलब ये है कि इंडिया ने पहले वो यूज किया है। इंडिया ने हमेशा से इंक्लूसिव ग्रोथ यूज नहीं। नहीं की। हाँ, तो ये वाली आई थिंक हम थोड़ा सा दोनों एलिमेंट लेके चल सकते हैं। तो आपने अच्छा लिखा है ये। हम्म। फुलफिल द गोल ऑफ वेलफेयरिज्म, एसडीजी 10 हो गया, अचीविंग द स्टेटस ऑफ डेवलप कंट्री टू बिल्ड इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिड्यूस। आई थिंक फेयरली इनफ, बस इसमें डेटा भी आने लगा है अब, तो डेटा 5% और आ जाएगा, तो आई थिंक दैट्स डन, नथिंग एल्स। एक कोट आ सकता है कोई किसी, मैंने जैसे कहा आपको, कोई बुक का नाम लेके आइए, थिंकर का नाम लेके आइए। जी। हाउ वाज द जूट इंडस्ट्री अफेक्टेड आफ्टर पार्टीशन। क्योंकि क्वेश्चन जो है अभी तक हमने जो नोट किया वो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री लिबरलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन, हम्म। यही है थी। हाँ जी। तो जहां पर वो डायरेक्टली बोल भी नहीं रहा है, तो आपके माइंड में पॉपअप होना चाहिए कि ये बोल ऐसे ही रहा है। वो ऐसा कैसे बोल देगा कि आज की डेट में कोई नीति आयोग ने तो बोला नहीं हम ट्रिकल डाउन करेंगे या इंक्लूसिव हम्म। ग्रोथ करें।
अगर वो डिबेट होता सोसाइटी में, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का डिबेट है, जी। तब हम बात करते हैं ना जो आपने लिखा। हाउ हम्म। वाज द जूट इंडस्ट्री अफेक्टेड आफ्टर पार्टीशन, व्हाट रेमेडियल मेजर वर टेकन टू अरेस्ट द डिक्लाइन। बंगाल आज भी है जूट का, बंगाल है, त्रिपुरा है, जी। बांग्लादेश ने पीट रखा है सब कुछ। तो जूट इंडस्ट्री द गोल्डन फाइबर फ्लोरिश्ड इन बंगाल ड्यू टू एलोवेट, बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब आपके बाद एक फैक्ट आ जाना चाहिए, क्या इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है या इंडिया एक्सपोर्टर है, कुछ भी आपको एक लाइन डाल देनी चाहिए थी आज की डेट में, या पोस्ट इंडिपेंडेंस से हम आज तक ऐसा आ गया, ऐसा करके आप बता देते हैं, कोई बात नहीं। पोस्ट पार्टीशन इम्पैक्ट, डिवीजन ऑफ फर्टाइल लैंड बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट बंगाल, supply chain was split, correct, forced migration of labor due to partition, Chittagong port went to East Pakistan, सही बात है, political stability shifted, I think very simply and correct point returns, they can just become little bit more little more comprehensive by some fact, otherwise I think they are perfectly put up. For example, we can write the name of the PSU, we have the jute PSU also, that वो हम बनाएंगे, हमने बनाई, बनानी पड़ी, आप ऐसा कह सकते हो, है जूट PSU बिल्कुल। so the remedial measures, government encouraged cultivation in Bengal, Bihar, Assam. For example, they provided MSP. Central Research Institute of Jute was established. Very good. National Jute policies with periodic revision. Jute Packaging Act encouraged mandatory use of jute. I think wonderfully written. Answer is on track. Delhi Heart, one district, one product. However, demand supply mismatch couldn't make jute a universal and affordable product, hampering full flow. फिर आप लेकिन एंड करो, जब आप इकोलॉजिकल इकोनॉमी की बात करते हो तो जूट पे जाना ही पड़ेगा, जी सर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमारे आप सजेशन दे दो अपनी तरफ से, जो ग्रीन जीडीपी की हम बात करते हैं तो उसको जूट हमें मदद करेगा। डिस्कस various measures of poverty with policy implications for removal of poverty. Now this is very open handed, again it is post independence, and till now whatever is possible one has to bring. Poverty is defined as social, political, and economic deprivation according to Amartya Sen. So that's fine, one of the definitions, it is one of the ways to define poverty. There are different ways by which poverty had been defined, पहले आपको बताना चाहिए। जी सर। इंडिया हैज अडॉप्टेड मल्टीफेसिटेड मेजर्स, जैसा आपने बताया भी, वर्ल्ड बैंक मेजर्स, परचेजिंग पावर पैरिटी, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन, बिल्कुल सही बात है। तो तेंदुलकर कमेटी है, फिर उसके बाद एक दो और भी, आई कैन रिकॉल करेक्टली, हाँ तेंदुलकर यू आर जस्ट ब्रिंगिंग तेंदुलकर कमेटी 2009, ठीक है, यूज मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड, सही बात है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज एक्सपेंडेड, रंगराजन कमेटी, आई थिंक फेयरली वेरी वेल रिटन, this is enriched answer which is having a lot of data and I think good facts with simplicity. पोषण आ गया, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन आ गया, एमजी नरेगा आ गया, हाउसिंग फॉर ऑल आ गया, एज अ रिजल्ट इन हैज रिमार्केबल फॉल इन मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी, $3 from 24% in 12 to 5. I think one of the best answers I would say, which is bringing everything little bit here and try to pepper it everywhere. जी सर। Now you tell me what you say. तो वही कि जहाँ पे मतलब आई हैव टू सपोर्ट फ्यू ऑफ द पॉइंट्स विद डेटा, जैसे बुक आई कैन कोट पोएम फॉर। Because see, there are different levels. For example, first of all, the best of the aspirants who are our competitors, they will be trying to, first of all, they will be clear headed. जी So if we are clear headed, then what we are, सर, नॉट ऑडिबल। now you can hear me. हाँ जी सर। Some people will be only writing data because they are so clear with the data, so they will score middle level marks. जी। Some people will be analyzing amazingly very well, so they will be also getting average and a little average marks. हम्म। But the one who is bringing both of them, which is a very difficult and a smart task, will be automatically getting decent marks. जी। So that is why it is a strategy. It is a strategy. It is inculcated point that we must try to bring like that. Otherwise, there are so many ways to explain the same answer. हाँ जी सर। So rather than satisfying we ourselves, our goal is to satisfy examiner. हाँ जी। We have to satisfy examiner that we are bringing on the table. So the chance of understanding and interpreting question differently will automatically be finished once we carry on with the course that we are undertaking, हम्म। and we will be able to you will be able to open up and become more aware, so automatically it will definitely change the things for you. हाँ जी सर। और क्या बोलते हैं आप? सर बस यही है फिर, मतलब आप बोल रहे हो कि उससे बेटर चांसेस होगा, आंसर थोड़ा और इम्पैक्टफुल होगा, तो होगा इम्पैक्टफुल, आप कर ही हमेशा से देंगे तो। देखिए कि कोई भी चीज अगर थोड़ा डेटा देता है और आदमी कीवर्ड्स को यूज करता है तो ऑटोमेटिकली फ्लो बन जाता है। हम्म।
जैसे एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव फार्मिंग और जो कॉर्पोरेट एंड आल्सो यू नो जो हमने कॉर्पोरेट, हम्म, कोऑपरेटिव चल एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो उन तीनों में अगर हम एक एक एग्जांपल ले आते, राजस्थान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी है, पंजाब कोऑपरेटिव, कहीं पे कोऑपरेटिव भी है, तो तेलंगाना इज अ बिग हब, जी। यू नो, कर्नाटका इज ऑल्सो वेरी बिग हब जहाँ पर हम्म, एमएनसीज भी हैं, और पंजाब तो एक, पंजाब में जो है एक्सपेरिमेंट होता रहता है, यू नो देयर आर इंडिविजुअल फार्मर्स आल्सो हु आर अंडरटेकिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्म, पेप्सी को आप चिप्स दे रहे हो, या यू नो, हम्म, या इंडियन, अब तो इंडिया के भी बड़े बड़े यू नो देयर आर फार्म्स, हाँ जी। हमें वो वाला एग्जांपल लाना है। हम्म, कोई मिलेट्स का, मिलेट बेस्ड बिस्किट्स हैं, अब मिलेट्स तो कंपनियां नहीं उगा रही, हाँ जी। भैया आपको फूड शिफ्ट करना पड़ा ना, फूड हैबिट शिफ्ट हुई है पोस्ट कोविड, हम्म, सारे बिस्किट मिलेट हैं, सभी जवार बिस्किट, मिलेट बिस्किट, इवन आपके ब्रेकफास्ट में भी जवार मिलेट और सब आ गया है। हाँ जी। नॉट पॉसिबल विदाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सप्लाई कैसे आएगी? हम्म, एंड देन, एंड देन रिलायंस इटसेल्फ, Reliance itself is having a great presence in retail. Big Basket is having a big presence in you know, in cities. They are selling vegetables. जी। तो कैसे कर रहे हैं? कौन सा मॉडल हो? कोऑपरेटिव मॉडल तो नहीं है वो। हाँ जी। तो वो मॉडल है, वो मॉडल वही है, कॉन्ट्रैक्ट और एमएनसी वाला है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉर्पोरेट। जी सर। तो आप ऐसे मारो, धक्का मार दो अंदर। हम्म, कोऑपरेटिव का आपने बोला कि अमूल, तो मैं सोच ही रहा था लिखने से पहले कि अमूल का एग्जांपल डाला जाएगा, और डाला भी। लेकिन अमूल ठीक है, अमूल बैड नहीं है, लेकिन अमूल को आप, एग्जामिनर को सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपको रियली में अमूल का पता है। सिर्फ ये लिखने से बात नहीं बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अमूल, हम्म, कि भाई आप ये लिखते कि अमूल एक रोल मॉडल इसलिए है कि मैक्सिमम फीमेल्स हैं, जी। उनका मॉडल भी ट्रांसपेरेंट है, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड है, हम्म, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव है इंडिया का, स्पेन तक पहुंच गया है अमूल का दूध। हाँ जी। तो ये, अब ये बात जो हमने बोली और एक आपने जो लिखा, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम हमसे अच्छा कोई लिखेगा, हम्म, तो हाँ स्कोर हमसे आधा नंबर भी अगर हर क्वेश्चन में बढ़ गया, आधा 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 मान लीजिए, जी। तो 20 का मतलब है 10 नंबर तो वैसे ही बढ़ गए। हम्म, तो, और अगर मान लीजिए हमारा आधा आधा नंबर बढ़ गया, हमें हमें 50% मार्क्स दिए जा रहे थे, और हमें 50% की जगह 53% दे दिए, जी। बस वो हाँ। उतना ही फर्क है। अब 50 की जगह 48 दे दिया, फिर हम क्या करेंगे? हाँ जी। सो थ्रू, इन ऑर्डर टू यू नो ब्रिंग दैट टू सिचुएशन आए ही ना, हम्म, you हाँ have to become more realistic, you have to become more smarter, जी सर। है ना? हम्म, हल्का सा, you हाँ have to जी। know, but do not write what you know, हम्म, try to think what maximum you can visualize। जी। हाँ जी सर। जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले, आपको आते हैं वो सारे पॉइंट्स? हम्म, आते हैं ना? हाँ जी। नया तो मैंने शायद कुछ नहीं बताया, नया बताया मैंने कुछ? नहीं नहीं सर। तो बस वो आना है, हम्म, वही आपको क्रिएट कर दो, मैं कहता हूँ हाँ। क्रिएट, सोचो, क्रिएट कर दो। हम्म, भाई एमएनसी है, चिप्स भी खा रहे हैं, और आजकल तो वो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक फूड का जमाना आ गया, हम्म, ऑर्गेनिक फूड के पैकेट्स आ रहे हैं, जी। कैसे होगा वो? तभी मैंने एपीएमसी का बोला, आईपीएमसी का रोल भी है वो, फार्मर आगे नहीं जाके राजी हो रहा क्योंकि उसको डर लग रहा है, एमएसपी छोड़ना नहीं चाहता। हम्म, बस ये डिलेमा जैसे ही आप ले आए, जहां पे वो बोलता है कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर इंडिया, जी। ये डिलेमा आप अगर आप ला पाए हम्म, आंसर के लेटर हाफ में, कंक्लूजन से पहले, कि जी। ये बेस्ट है, लेकिन हम इसको कैसे यू नो अडॉप्ट करें, कैसे हम इसको पोर्ट्रे करें। जी। अब टूलिप्स भी जा रहे हैं ऐसे तो इंडिया से, हम्म, एग्रीकल्चर ही तो है टूलिप्स भी, हाँ जी। हॉर्टिकल्चर ही तो है part है उसका। एनिमल हस्बेंड्री में मैरीन फूड भी ले, मैरीन, वो कह रहा हूँ वो, मैरीन तो नहीं आएगा, मैरीन का मेरा मतलब है कि व्हाट है, सी फूड। हाँ सी फूड। हम्म, तो एग्रीकल्चर का ही एस्पेक्ट है ना वो सब। हाँ जी। आप ऐसे करके आपको ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को ब्रेक कर देना, एक बार एक टॉपिक का आपने ऐसे सोच लिया, हाँ तो जी। आप हर टॉपिक में कुछ ना कुछ नया ले आओगे। जैसे पॉवर्टी वाला जो था, आई थिंक इट वाज फेयरली रिटर्न, उसमें आपने पूरा ओवरव्यू दे पाई, तेंदुलकर, रंगराजन, रुपैया सब बताया, हम्म, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप सारी बातें लेके आ पाए थे, फिर आप आगे का भी बोलते। सुरजीत भल्ला ने भी लिखा है इसके बारे में, और तो आईएमएफ पहुंच गए हैं अब। जी। तो आई थिंक वी आर मूविंग ऑन ट्रैक, एंड विल ट्राई टू बिकम लिटिल बिट मोर स्मार्ट,
and we'll continue the exercise with good faith and complete concentration. And जी that is the goal of all the courses undertaken in Ansarkari. Thank you very much.